All right. So good evening, friends. Welcome to this session. So this I wanted to keep it as an introductory session. Now I've been, of course, contemplating. Last year I had started this a little later by the around Christmas, in fact, or just a day or two before that. In fact, last year we had a surprise. If you know, uh, till last year, CAT percentiles used to be out on the first Sunday of January, which coincided with that written exam. Most of the years, right? That was a trend. But last year, they surprised everyone by declaring the percentiles on 20th December. And in fact, some colleges like Rohtak, तो उसने कॉल्स भी भेजना बहुत जल्दी शुरू कर दिया था एंड रोहतक के इंटरव्यूज तो स्टार्ट भी हुए थे बाय 15th of Jan, if I remember correctly, even little before that. तो देयर वाज हार्डली एनी टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू रिएक्ट एंड बाकी के जो टॉप कॉलेजेस थे अहमदाबाद बैंगलोर एंड दे ऑल आल्सो स्टार्टेड कमिंग आउट विद द रिजल्ट बाय January 10th or between 10th and 15th. NMIMS and symbiosis came out around 15th. So things started happening at a very rapid pace. So this year, again, it might so happen. So I thought, let me, and of course, there were students who were reaching out to start a little earlier. Because obviously it needs preparation. You can't just suddenly jump into it. And also, while on the other hand, we have to look at the upcoming exams also, which is SNAP. NMAT, most of you have given, but still some are left. And SNAP is there, and then ZAT. But obviously, ZAT is a little way off. So we can't really wait for ZAT to be over before we plunge into the preparation for this phase. So we need to parallelly manage both in some way or the other. क्योंकि ZAT तो अभी थोड़ा दूर है, right? So having said that, whoever could join today, right? Some of you, in fact, many of the people who are in that group wanted to join by 20th, some by even 25th. So that's okay. We'll keep moving along. So this session is going to I'm just going to talk about what all will you get out of this. Okay, first of all, what is the process? Okay, what college? I mean, broadly, we'll not go into each and every college, but I'll tell you broadly कि कौन से colleges की किस तरह की process होती है. Okay, what all can you expect? So let's take a look at this selection process के components क्या हैं, right? So we have personal interview, which is a part of every college, right? This is the integral part of the whole. So there's no college which would take you without any personal interview, right? Now we have VAT or like IIM Ahmedabad calls it AWT. So you can call it written ability test or writing ability test. They might call it analytical writing test, or somebody might call it essay, somebody might call it something else, but it's basically the same thing, more or less, wherein you are given a piece of paper and a pen, and you have to write maybe within 20 minutes or 30 minutes an essay on certain topic. Topics क्या होंगे, कैसे होंगे, how do we address? As we go along, we'll keep doing this. So this has become an integral part of the process at most of the IIMs. Okay, most of the top IIMs at least, they have the VAT instead of group discussion. Okay, group discussion is now losing its importance. Okay, in fact, there are hardly any institutes. There are a few, कुछ जगह होता है group discussion, but बहुत कम रह गए. Okay, most of the नहीं पेन एंड पेपर है, अगर आपका पेन एंड पेपर है, टाइपिंग वाला भी है कहीं पे, ओके, वैट पेन एंड पेपर भी हो सकता है, और अगर जहाँ फेस टू फेस है आपका, अब देखो लास्ट ईयर के पहले जैसे हमें पता है 2020 में और 21 में बिकॉज ऑफ कोविड देयर वाज नो फेस टू फेस interaction. The whole selection process was done online. But last year, some institutes did offline, but most of the institutes yet last year also they did online. Some institutes like NMIMS or in case of IIM, so IIM Bangalore, so ऐसे कुछ IIMs थे जिन्होंने कैलकाटा एंड जो कि ऑफलाइन भी किया था, and there were some which did. Most of them did online. Now this year how it will unfold अभी इतना clarity नहीं है, but obviously we can expect it to be a mix. मिक्स ही होगा. कुछ कॉलेजेस ऑनलाइन लेंगे, कुछ कॉलेजेस ऑफलाइन लेंगे, बट यस, ऑफलाइन फिर से धीरे धीरे मे बी मोर एंड मोर कॉलेजेस माइट गो फॉर ऑफलाइन. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. ओके, सो ग्रुप डिस्कशन इज लूजिंग इंपॉर्टेंस. बहुत कम 2-3-4 इंस्टीट्यूट बचे हैं जहाँ पे भी
ग्रुप डिस्कशन होता है, कहीं कहीं पे ग्रुप एक्सरसाइज भी होती है, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डिस्कशन एंड एक्सरसाइज. Group discussion में you are given a topic, 8, 10 people, maybe 6, okay, depending on the number of people they want to be there in the discussion. You are given a topic and you discuss it, and most of the times this is not really a very good idea because the whole thing degenerates into a fish market. I'm sure most of you who have gone through group discussions in different forums, you would have realized that uh, I mean it's kind of quite chaotic and messy, and doesn't really reflect the ability of people because it's not very rational discussion. So that's why it is not really favored at too many places. However, we cannot ignore it. Maybe some institutes puts it in their selection process this year, so we can't really be sure. So we'll have to practice. Okay? We'll definitely have an intense practice sessions on these. That group discussion is also being replaced at many places by extempore. Okay, whether it is FMS or it is even MDI or even at many of the CAP colleges or even many other colleges, you have extempore. So here, in fact, extempore, I find it to be a better judge of somebody's speaking ability compared to group discussion, because here you can make a mark by your if you have those skills where you can talk about anything, then you can make it more evident in extempore rather than group discussion, because here there are so many other dynamics also. So extempore is again another tool, and which we will also again practice very intensely. Group exercise. So few colleges have group exercise. Symbiosis colleges mostly. Most of them have group exercise wherein a group is given an exercise. That exercise could be, let's say you are being given the charge of organizing the annual festival of the college. So if there are 6 people in that group, then those 6 will have to work out among themselves how they'll organize themselves, who will do what, how they will go about doing the whole thing. Okay, so that's the group exercise. Then you have case studies also. So some colleges earlier, NMIMS used to have case study discussions. Last year they did not have. A few colleges may have a case study discussion wherein a case is given and then you discuss and find some kind of a solution. This Watson-Glaser test is a test that was introduced in NMIMS Mumbai last year. This is like a CR kind of a thing, okay, a critical reasoning that tests your conclusion, inference, strengthening, weakening, and those kind of stuff. And this, in fact, had a 20% weightage in the overall scheme of things. So NMIMS had 50% of weightage on NMAT score, then 20% on this, 10% on PI, and 10% on WorkX, 5% on academics, and 5% on diversity. So that's how they had given the weightages. So this also we will cover. So all of these in a mix, you can say, but obviously most of the top IIMs are these two. XLRI could be group discussion, but there also you have a VAT, you have a person interview. FMS, you have a extempore and you have a person interview. So that's about the whole bag. So any questions on this? Any questions? Symbiosis doesn't have VAT. No, Symbiosis has a group exercise and it has a personal interview. I don't think it has VAT. Okay. Anyone has any questions on these at this moment? So हम लोग ABC follows personal interview and VAT. Okay, very clear. ABC में personal interview और VAT होता है. That's it. No group discussion, nothing. In fact, even Indore, Shillong, or Kozhikode, or Lucknow, they all have VAT these days. No one has group discussion. Okay, so that's about the whole thing, and we will and what the deliverables this program, whatever we are going to go through in the next. See, 2 months is a tentative timeline that I've created. We obviously will need to go beyond that also. The maximum flurry of activities will happen in January and a part of February, but some interviews happen even in March, mid of March, and on an outside
it might even go towards the end of March. But those are few and far in between, not as a rule. So most of the activities will happen in January and February, and of course some will spill over to March. So we will design this in such a way that the maximum whatever we need to practice, we do in of course towards December end and January and February, and then we'll take it on as to whatever needs to be done. So this program, what it will deliver. Okay, so this will we'll talk about basics in each area. So today we'll talk about the basics in person interview. Then of course, so these are the basics. We'll talk about what an interview process is, what is expected out of you, what kinds of interview are there, what kind of questions are asked. We'll cover those kind of things in today's session. And this is obviously we will talk about this in a session where how do you answer these questions? Okay, we'll touch upon them a little bit today, but how do you answer these questions? There'll be first a general session for those. Okay, simple question: why MBA, or your goals in life, or tell me about yourself, or strengths and weaknesses. These kind of questions. So we will see how best to or gap. Somebody has a gap, then, or somebody doesn't have a very good academic record, or somebody has something else. So all of those things we will discuss in a group, and then obviously I'll be working with you individually also to help you prepare. As we do mock interviews, these things will come out that okay, this your answers to this part needs to be tweaked, or this should be included, or that should be excluded, or this is how you should be presenting yourself. ऑब्वियसली इसमें लेकिन ग्राउंड वर्क आपको करना पड़ेगा. ओके, इसमें देखो अभी हम जब इंटरव्यू की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे तो विल टॉक अबाउट it all hinges upon how well you know yourself. Okay, many times we don't know ourselves very well. We have some achievements, we have some strengths which we are not obvious, we are not overtly aware, I would say. Okay, हमें पता नहीं है, हमें लगता है कि हमारे में नहीं है ये, लेकिन है आप में. Because each and every person is endowed with some strength and some achievement they have had in life. Achievements को हम सिर्फ और सिर्फ हर time we look at it in terms of academics or in terms of what the world expects us to be, but where there could be in many other areas where we may have achievements which we should be highlighting, but we somehow are not really, or it's a blind spot. So I'll help you obviously to uncover all of those, but then obviously you will have to, I mean, don't expect any ready-made answers to be given. Yes, I'll be giving you a lot of templates or formats, but obviously you will have to work to prepare those drafts yourself, and then we'll work towards refining those as we move ahead. SOP writing. Now, SOP is obviously a part of many of the institute's requirements when you fill the form or when you get a call. So whenever you get a call from a college, then they will ask you to fill a form. Right till now, you've been filling forms for admission for the exams, right? Now you'll be filling forms for some of you have been already doing that. Some of you have filled the XIMB form. Some of you have filled maybe TAPME form or some other college. So there you know that there are some questions that are asked. Why do you think you are suitable for this college, or why do you choose this college, or tell us something about yourself. Some kind of a question is already there, right? SP Jain में भी लिखा हुआ आपने, तो उसको फिर कई जगह पे वापस से लिखना पड़ेगा, या we'll have to refine, we'll have to adhere to that word or character limit there. तो ये सब हम करेंगे, ठीक है? Then we'll have intense GD extempore practice. So going towards the second phase, so I've divided this into two phases because right now, as many of you are studying for SNAP, ZAT, and that will continue till 7th of January. So उतना टाइम नहीं है अभी कि हम इतना टाइम स्पेंड कर सकें इसमें. So we will start after that the second phase, wherein we'll have intense practice. We'll have more number of groups, more students will join. So obviously इसमें ज़्यादा ग्रुप बना दिए जाते हैं, क्योंकि एक घंटे में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले पार्टिसिपेट करने की एक्सटेम्पोर में या जीडी में. तो इसलिए ग्रुप्स बन जाएंगे, तो जिसको जो सूटेबल टाइम है उसमें वो ज्वाइन कर सकता है. देयर बी सम कॉमन सेशंस एंड देन देयर बी सम सेशंस वेयर यू कैन चूज दैट ओके मुझे 6 to 7 ठीक है, मुझे 7 to 8 या मुझे ये सेशन ठीक है. And then we'll have in-depth current affairs and analysis. Current affairs or current awareness is one part of your personal interview set of questions. They are looking at, see, आप लोगों को
ऑब्वियसली उन्हें यूपीएससी वाला क्वेश्चन ये नहीं है करंट अफेयर्स, ओके, आपको यूपीएससी जैसा इसमें नहीं घुसना है, बट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ओके, यू शुड हैव सम व्यूज ऑल्सो। इट्स नॉट जस्ट दैट यू शुड नो कि हाँ हमास और इसराइल में चल रहा है या यूएस सॉरी यूक्रेन रशिया में वॉर चल रहा है, लेकिन आपको उसके इम्प्लीकेशंस एंड मोर टुवर्ड्स द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ बिजनेस क्या उसके इम्पैक्ट्स हैं वो सब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. You should have some views over that, right? So we will pick up some topics each day. Okay, I'll give you some topics, maybe 2 in a day, alternate days. You will prepare those topics on your own. You will kind of work and prepare, and then we'll discuss those in the class. So that will then cement the learnings, because obviously when so many of you go through that, then different aspects of that same thing will come out, and we'll discuss that, right? So those are the in-depth current affairs sessions that we'll keep having. VAT assignments, okay, I'll be giving you VAT assignments, and then I'll be helping you also to improve or refine or maybe improve in that, right? And multiple mock interviews. So we'll have different interviews. We may have interviews specific to that institute also, whichever you got call from. And for people in Delhi, now since this might also involve offline, I mean face-to-face interviews, so we can have some offline interviews also in Delhi. Okay, though most of them will happen online, but yes, there are some students who would want offline. So I live in Delhi, so obviously people from Delhi NCR surely can. We can have even some mock, I mean offline GDs or extempore also some sessions. This also can be looked at. Okay, last year I did not do so. Last year it was totally online, but this year, as we will know, as the calls keep going, we will understand that whether the institute is conducting offline or online, and depending on that, we'll be deciding which to do more, right? And then, of course, Watson Glaser test or any other psychometric or any kind of test which is a part of a selection process, that also we will look at. So all these things we will work, and you will get support from my side in all of these. Any questions or thoughts that you may have so far? Okay, all right. So let's move ahead to the second part of the program. इंटरव्यू बेसिक्स. ओके, सो अब इंटरव्यू तो ऑब्वियसली ये सबने फेस किया है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं, जैसे कुछ बोल रहे थे, एनी मॉक साइकोमेट्रिक टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड. हाँ, वॉटसन ग्लेसर टेस्ट आई प्रोवाइड. ओके, आई गॉट, बिकॉज सी रेलेवेंट चीज ही प्रोवाइड करने से फायदा है. तो अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा लेके आता है कि यहाँ पे होता है, देन विल डेफिनेटली आई प्रोवाइड. बट अभी फिलहाल लास्ट ईयर जैसे वॉटसन ग्लेसर था, तो वो हमने प्रैक्टिस किया था. वी हैड कंप्लीट सेशन डिवोटेड टू दैट, and then I had given a lot of questions also to do. So people did very well in that. In fact, last year we had almost 20 students who went to NMIMS Mumbai. I mean, who were selected. Almost 10, 12 are still there. 10, 12, 7, 8 have gone to other institutes. All right. So सर एक चीज पूछनी थी. हाँ हाँ, पूछो पूछो. सर साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है? देखो, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करने के लिए होता है. ओके, जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वॉटसन ग्लेसर इज नॉट रियली अ साइकोमेट्रिक टेस्ट. साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है वो आपको आपकी कंसिस्टेंसी चेक करता है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो. इज देयर डिस्कनेक्ट बिटवीन द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग टू वन क्वेश्चन एंड द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन अपीयर्स समटाइम लेटर इन द टेस्ट, एंड वेदर यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग. जैसे आपको अगर आपकी मतलब उसमें पर्सनालिटी चेक होती है एक तरह से कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो. जैसे सपोज इन वन क्वेश्चन यू आंसर दैट यू आर अ सोशल पर्सन, यू लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, then some question will be framed in a different way, and there if you write that or you respond to it in a way that show that no आप social तो हो ही नहीं, आप तो introvert हो, या आपको लोगों से मिक्सअप होना अच्छा नहीं लगता है, you like to keep your own company, तो then ये contradict हो गया ना. तो आपको इसी तरह से आपके हाउ वेल यू नो योर सेल्फ और व्हाट इज योर टेम्परमेंट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें, स्ट्रिंग ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट वेरी क्विकली, and then it is analyze that whether you are consistent or what kind of personality you are. Okay, तो वो होता है, बट वो बेसिकली नहीं है, अभी नहीं है वो किसी का भी पार्ट. सो वी कैन
वो इसमें माई कैट में और इसमें दूसरी किसी एग्जाम में रिटन एग्जाम का पार्ट है वो. इट्स नॉट द जीडी इंटरव्यू. वॉटसन ग्लेसर साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता सर? नहीं, वॉटसन ग्लेसर इज मोर लाइक योर क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग. अच्छा। आपने लास्ट ईयर किया था क्या वो साथ में नहीं हमारे? सर, वो सेशन अटेंड नहीं करा था मैंने। अच्छा, ओके ओके. नो नो, वॉटसन ग्लेसर में आपको स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग ये इस तरह की क्वेश्चन बनेगा, मतलब आपको लगेगा कि आप क्रिटिकल रीजनिंग ही कर रहे ओके सर। हो. ओके. Alright. So, interview basics. Now, why interviews? Let me ask you this question: that why are interviews conducted? मतलब क्यों आपको क्यों दुखी करते हैं इतना? कुछ लोग तो ग्रिल हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े नर्वस हो जाते हैं, बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, राइट? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कई लोगों का. तो ऐसा क्यों करते हैं? इन्हें क्यों इतना मजा आता है आपको तंग करने में? बताइए. Anyone would like to take this question? Why is interview such an important part of this whole process? Uh, People know you better when they interact you in person. Okay. Yes, Nandini. Okay. Sir, to be able to gauge ki exactly, what the overall personality of the candidate is, because, simply getting a good score does not suffice in a B school, because they are eventually preparing you for the corporate world. And wahan pe how you deal with different kinds of people is very important, and how you Right. face them in Right. reality. Right. Correct. So, problem solving skills. Yes, fine. So some of you have responded on the chat also. So see, they have seen your written score. Right now, written score, as we know, is just they've not seen you in person. They've not seen your communication. They've not seen you interact. So they can't judge you. Okay, so you may be very bright in the sense that you may have cracked CAT, you may have got 99.9 percentile, but how are you as a person? Okay, because obviously this whole business world or management and everything is all about people, right? You need people skills, because this organization is not something that can run on its own, right? Organization has different people and they need to all work together. So how well you would be able to work, how well you will be able to respond to certain situations, can you think on your feet, how flustered do you get when you are faced with some kind of a stress, or your breadth of your horizons, that how broad are your horizons. So all this is being tested there, right? uh, okay, so Hardik is just joined. So Hardik, we were discussing about, so far we've discussed the introduction to this program, what all will be delivered, and what are the various components of the selection process at different institutes. And right now we are getting into the the PI part, the basics of PI. And the recording, this session is being recorded, so you don't have to worry about missing any part. The recording will be loaded on that group after the session is over. Okay. So why interviews, right? So we understand why interviews are held. That's such an integral part of the whole thing, because you as a person, they don't know you, they just know your written score, right? Now interview panel. तो इंटरव्यू पैनल जो है वो टिपिकली इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन, आई मीन जनरली इट इज 2 to 3 people, 3, but in certain cases it might even be more. Okay, जनरली 2-3 लोग होते हैं, बट कभी कभी 7 तक देखे गए, right? And who all are there? So you have professors. Obviously professors form a chunk of that. There are some alumni who are called for interviews, right? So I've been also associated with MDI at certain point, and also with some other institutes. So alumni are also called, and psychologists are also called, right, to evaluate or look into the psyche of a person. So mostly professors and alumni. This rare. I have not come across a psychologist sitting in at least any interview that I have faced so far in this world. So इस तरह से no, I'm not an MDI alumni. I'm not an MDI, right? All right. So moving forward, so that's the interview panel. Now, types of interviews. So we have basically 2 types of interviews: individual interviews and group interviews or group interviews. Now, so far, not too many institutes. The most prominent institute that does group interviews is which one? Most of you should know that. Group interviews कहाँ पे होते हैं? Anyone is aware? Sir, is it SP Jain? Yes, yes, yes. SP Jain, correct. So SP Jain has got the, I mean, they have group interviews in that too in 2 phases. There are 2 group interviews, and then finally there's one interview with the dean.
So it's and that's the only institute that I can think of that organizes group interview. So obviously in group interviews you have four or five or six people, maybe five or six, 6 होते हैं कई बार, तो 6 लोगों के इंटरव्यू एक साथ चल रहे हैं, एंड यू आर बीइंग आस्क्ड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एंड हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, somebody was saying, okay. So most of the times, of course, it is individual, but SPJN mein you have group interviews. So we'll practice group interviews as well in our classes because there is a lot to learn. Group interviews में आपको एक दूसरे से काफी सीखने का भी मिलेगा. If somebody is able to respond to a question in a certain way, and you can learn a lot, right? Then the other differentiation between interviews could be a regular interview or a stress interview. So what is the difference between regular or stress? Anyone? कभी स्ट्रेस इंटरव्यू हुआ है क्या आपका कभी? किसी का? Anybody has faced any stress interview? No. Okay. रेगुलर इंटरव्यू तो हुआ है आपका, ठीक है. तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखो स्ट्रेस इंटरव्यू, आई मीन ऑब्वियसली, यस अफसर बोलिए. Sir, in regular interview, they are like chill and they ask questions and they like what you give the output to them, they ask questions from that field only. Like they are मतलब वो तुम्हें समझना चाह रहे हो और तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते. बट स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या होता है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस देते रहते हैं तुमको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तुम्हारे आंसर्स पे क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब तुम्हें ये चाहेंगे कि कहाँ तक इसको ले जा सकते हैं हम डाउन. करेक्ट. तो उसका पर्पस कई बार क्या होता है ना, मतलब व्हाई इज इट सो, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई वुड some interviews be conducted as regular, and why would some become stress interviews? So this could depend on what? कोई सा इंटरव्यू? हाँ बोलिए पलक. Probably on how we handle a situation. Say if I am in an interview and I am given a situation and I stress out about it, of course it will be visible on my face, Right. and probably that's when they want to check my Temperament. skills as to how can I actually handle stress in the real world, because that's what they are preparing me for. Right. Right. See, routinely it doesn't happen. Okay, in I would say 90% of the cases, it does, stress interview doesn't happen. But see, let's say somebody is trying to be over smart. Okay, we have some people who think of themselves to be God's greatest gift to mankind. Don't we? Don't we know such people? है कि नहीं? कि सभी के, I'm sure everybody would be aware of somebody or the other who thinks that they are cat's whiskers. Okay, cat's whiskers मतलब some very special person. तो कई बार लोग they come with that cocky attitude to the panel. कई बार ऐसा होता है कि they come with that kind of attitude. But trust me, जो ये good institutes, now of course, see interview जो होता है उसमें एक बहुत important part जो है, तो interviewer और interviewee. Now interview का जो level है, that depends not just upon the interviewee but also on the interviewer. क्योंकि एक अगर आप डिफरेंस देखेंगे जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, ओके, ABCL, KI, ब्लैकी हो गया, या शिलोंग, मतलब जो भी अच्छी XLRI, even IFT for that matter, or FMS or MDI, they are seasoned stalwarts. They're professors, and the people who you interview you are in a different league. Okay. Whereas if you look at the other institutes, okay, maybe some CAP or maybe IIMs or smaller IIMs or maybe some other institutes, okay, where even for that matter, maybe NMIMS or SIBM, you will find, okay, those guys are fine. Okay, they are not really, I mean, they are manageable kind of. Because उनकी खुद की डेप्थ, देखो आपकी खुद की भी डेप्थ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. अगर आपको अच्छा इंटरव्यू लेना है तो यू शुड ऑल्सो बी ऑफ दैट कैलिबर. तो कई बार क्या होता है कि अब जैसे ये some smart cookie comes and he tries to be over smart in front of that professor who's been there for donkey's years and who's seen everything. तो वो फिर obviously he will not like that, and then he will start putting this guy under stress. तो स्ट्रेस इंटरव्यू कई बार आप खुद भी ट्रिगर करा सकते हो अगर आप थोड़ा ज्यादा होशियारी दिखा रहे हो. जनरली स्ट्रेस इंटरव्यूज नहीं होते हैं, बट देयर इज समथिंग और द अदर इन योर एटीट्यूड, इन योर आंसर, और समथिंग विच द फेलो thinks that you are trying to be
some extra smart or something, then you are in for a tough time. तो जनरली मैंने नहीं देखा है कि लोगों को ऐसा स्ट्रेस देते हैं, ओके, इन जनरल. बट हाँ, अगर आप थोड़ी सी होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे, देन यू माइट इनवाइट दिस अपॉन यू. सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू हैव टू कम अक्रॉस. ऑफ कोर्स यू कांट बी टू टिमिड और यू कांट बी टू डिफिडेंट ऑल्सो. मतलब ये भी नहीं कि आप एकदम डरे भीगी बिल्ली बन के खड़े हुए हैं. ओके, यू शुड प्रेजेंट अ बैलेंस्ड एक्सटर्नल टू द पैनल, राइट. सो रेगुलर में आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे और कूलली चलेगा, जैसे अफसर वाज मेंशनिंग. स्ट्रेस में आपके आंसर को क्वेश्चन किया जाएगा, राइट. दे विल एंड देन दे विल बी स्ट्रिंग ऑफ क्वेश्चन. एक खत्म होगा नहीं कि दूसरा शुरू हो जाएगा, एक का क्वेश्चन खत्म होना नहीं कि दूसरे ने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन साइमल्टेनियसली डाल दिए जाएंगे आपके ऊपर. दे विल बी रिडिक्यूलिंग यू. So would I be conducting stress interviews in mock? Yes, I would conduct. Why not? Surely. All right. So this is the difference between regular and stress. Duration of an interview. Now, does it matter if somebody's interview is 10 minutes? If you go to FMS, last year I was there also. मेरा एक student Bangalore से आया हुआ था, आदित्य वर्धन. So he had come for FMS and he wanted to meet. So I had gone there to meet. एक मैंने वीडियो भी डाला छोटा सा उसके साथ में, अगर देखा होगा किसी ने. तो he was there and he I mean it just lasted for 10 minutes. Okay, so FMS के इंटरव्यू जो है वो बहुत ही छोटे चलते हैं, 10 मिनट चलते हैं. किसी किसी जगह पे किसी का इंटरव्यू 30 मिनट भी चलता है. ओके, किसी का 20 मिनट चला, किसी का थोड़ा और ज़्यादा चलता है. तो इज दिस एनी इंडिकेशन, एनीवन, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, कि किसी का ज़्यादा लंबा इंटरव्यू चल रहा है तो ही हैज़ गॉट बेटर चांस, किसी का छोटा सा है तो मतलब उसको निकाल दिया, ऐसा कुछ है क्या किसी के दिमाग में? Anyone has this kind of perception? No. Yes, officer. नो सर, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब ऐसा अगर कुछ नहीं. लंबा भी चल रहा है तो कुछ नहीं, क्या पता वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो और मतलब वो ग्रिल करके भी देख रहे हो तुम्हें, तो ऐसा कुछ नहीं हो. शॉर्ट में वो जल्दी तुम्हें पहचान पाए और मतलब वो खुश हो तो जल्दी तुम्हें भेज दें, क्योंकि उन्हें बहुत सारे इंटरव्यू लेने हैं. Correct. So there is no correlation. Okay, because some people have this, they when they come out they describe, oh मेरा तो इतना लंबा चला था. अच्छा, उसका इतना ही चला. तो दिस एक थोड़ा प्री कंसीव नोशन होता है लोगों के दिमाग में, तो ऐसा कुछ नहीं है. Okay, a short interview could be also a great interview, a long could be also a bad interview, or vice versa, right? So there is no such correlation. Okay, now let's go to the preparatory aspects. Okay, how should we prepare for the interview? But obviously, you have to put your best foot forward. So dress code. Okay, so what would be, as per you, the dress code for, let's say, male, for females? So the male would not to answer for the male part. Yes, Aman. सर वही अपना शर्ट पैंट और बस, मतलब, और बेल्ट में भी फॉर्मल और फॉर्मल नहीं, शूज. but what about suit? नो Jacket? सूट आई एम नॉट श्योर, बट यूजुअली सिर्फ शर्ट से हो जाना चाहिए, आई थिंक. No, I differ from you here. Okay. Okay, you should wear a suit. Okay, if not suit, at least blazer, but it is always better to be in suit. Yes, Rishikesh? Suit with tie should Yes, suit work, I with tie. guess. Yes, suit with tie. Okay, not without tie. Suit with tie. Now, suit also, what should be, let's say, the color, shirt और जो शर्ट और आपका जो सूट और जो ट्राउजर है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी कॉन्ट्रास्ट एंड शर्ट शुड बी लाइटर. ओके, जो आप अगर आप इवनिंग वेयर में जाते हो तो इवनिंग वेयर में डार्क शर्ट और लाइटर जैकेट और लाइटर ट्राउजर हो सकती है, लेकिन फॉर्मल में यू शुड हैव अ डार्क सूट. इट कुड बी ब्लैक, इट कुड बी नेवी ब्लू, इट कुड बी ग्रे, डार्क ग्रे, and you should have a light colored shirt on it. Okay, and then a proper tie. So this is, and the shoes, what kind of shoes? अभी तो सूट के साथ लोग स्नीकर्स पहन के आ जाते हैं, तो वैसा Sir, नहीं I think करना. formal closed toes, like Yeah. very important. Yes, closed toes, no loafers. Okay, no moccasins, which means कि without laces वाले shoes नहीं पहनने. You have to wear proper, and black is the best thing. Okay, because brown doesn't go with all. So you have to wear proper shiny black shoes with laces. Okay, what about women folk? Sir, even for socks also it should be the same color as the shoes. No, socks are generally the same color as the trouser. Trousers. Okay, socks are matched with the trouser generally. Okay, Shubham कुछ बोल रहे थे?
सर जो मतलब जो जैसे बिजनेस फॉर्मल्स होते हैं उसमें उसमें जो जूते पहनते हैं वो दो टाइप के आते हैं, मतलब फॉर्मल में भी, मतलब विद लेस और विदाउट लेस। नहीं, तो विदाउट विदाउट, लेस नहीं, विदाउट अच्छा, लेस नहीं, यू शुड वेयर विथ लेस. ओके सर, गॉट इट। यस, यस मानव. सो ये जो ड्रेस कोड है, मतलब ऑफलाइन के लिए तो समझ में आ रहा है कि सूट, तो जैसे ऑनलाइन भी होता है तब भी वी शुड बी हाँ इन सूट। हाँ, यस ओके। यस, यू शुड बी इन सूट विद अ टाई. नीचे पजामा पहन के बैठ जाओ, कोई बात नहीं. ठीक हाँ है, सर, लेकिन मतलब यस सर। लेकिन यू शुड बी इन अ फॉर्मल दिस थिंग. ओके, विमेन फोक. So maybe like a blazer, shirt, and pant, या और साड़ी में भी, बट साड़ी आई or डोंट थिंक. like a Indian wear, or या Indian इंडियन wear, वेयर, like a suit करेक्ट, or और इंडियन वेयर, something. करेक्ट, और इंडियन वेयर, राइट. Okay. Now entry and initial moment. So suppose it's an offline interview. So how would you? So door is closed, right? And you are sitting there now. Your name is called, so you have to enter. So how would you enter the room? Anyone? Yes, Aman. So I'll knock on the door. You'll knock on the door and enter. Yeah. Okay. You don't wait for their for anything to be given permission from inside. You should knock and enter. Yes, Manav. So knocking on the door 2 times, then waiting for their. No, no, no. Don't wait. Just knock and go inside. Okay. You don't wait for their Okay. approval, because many times they might be sitting too far back, or you won't get the. अगर वो बोलेंगे भी तो आपको हो सकता है बाहर आवाज ना आए. ओके, तो आपको नॉक करके और अंदर घुस जाना है. दरवाजा खुला हुआ है मतलब नॉक करके घुसो आप. ओके, ऐसा अगर कुछ उनको ऐसा है तो फिर वो लॉक करें. ओके, यू आर सपोज टू नॉक एंड एंटर. यू आर नॉट सपोज टू wait for their permission, right? No, no, don't knock on the door and enter. Okay, don't wait for their permission, because many times क्या होता है ना, जैसे आपने नॉक किया, वो रूम के अंदर कहीं पे दूर बैठे हुए हैं, आवाज आई उनकी नहीं आई, आप बाहर खड़े हुए हो, वो वेट कर रहे हैं, राइट? तो वो नहीं करना है. तो वी हैव टू एंटर नॉक करके, देन आफ्टर दैट वी विल गो देयर एंड वी विल सिट, और हाउ विल वी, व्हाट विल वी से. So should we ask, like we would greet them, but should we, I think they should ask us to sit and only then should we sit. हाँ, so we should greet them. When we greet them, we should look at all the panel members. Okay, we should look at all the, we could, so we can address them together. Good morning, gentlemen. Good morning, ma'am. If suppose there is one lady there and a couple of gentlemen, then we can do like this, right? Or if there are all males, you can also say good morning to you all, looking at each one, making an eye contact with each one. Okay, you can't just make an eye contact with one person. Yes, Shubham. सर गुड मॉर्निंग एक बार ही बोलनी है, जैसे मतलब जैसे तीन तीन सर खड़े हैं तो सबको अलग अलग गुड मॉर्निंग नहीं, बोलनी है एक सबको बार? अलग अलग नहीं बोलना. आप गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बोल सकते हो. ठीक है, यू कैन से ओके गुड सर। मॉर्निंग टू यू ऑल, राइट? और उसमें तीनों को आप देख लो, चारों जो भी बैठे हों, राइट? ओके, एक ये क्वेश्चन आ गया कि इंटरव्यूअर आस्क्ड द गाय टू लीव द रूम एज सून एज ही एंटर्ड, सेइंग वी डोंट लाइक यू, हाउ टू टैकल दैट. वो अभी हम देखते हैं, वो स्ट्रेस वाला इंटरव्यू है ये. ठीक है, सपोज करो कि आप घुसे, उसने कहा यार निकलो यार यहाँ से, यार हमको तो तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है. तो अब उस सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, तो अभी देखते हैं हम कैसे करेंगे. वी विल कम टू दैट. ओके, दोज आर दोज स्ट्रेस इंड्यूसिंग टेक्निक्स. ठीक है, तो आपने एंटर करा, देन यू विल वेट, देन यू विल कीप स्टैंडिंग, यू विल then suppose they say that okay, good morning so and so, good morning Shubham, Mr. Shubham, yeah, good morning Shubham, whatever, and then please have a seat. Okay, they will offer you a seat. So you can then sit, or if they don't offer, then you have to ask, may I sit sir, may I take a chair. Okay, तो बिना उनकी परमिशन के आप ना बैठे उनके सामने, तो बेटर है. ओके, देन हाउ विल यू सिट, किस तरीके से बैठेंगे, मतलब अपने हाथ कहाँ रखेंगे. टेबल तो होगी आपके सामने, तो टेबल पे हाथ रखोगे, हाथ कहाँ रखोगे, पैर किस तरीके से रखोगे, बताइए. व्हाट इज द राइट वे टू सिट. यस अफसर. So sitting attentively and putting your hands on your lap. हाँ, putting your hands on your lap, correct. And your feet should be crossing each other, legs cross करके. ठीक है, आपके legs एक दूसरे को क्रॉस होने चाहिए. That is the best way to sit. And you will not be leaning forward, you will not be leaning back on the backrest. You should be in the middle, you should be looking attentive.
दैट्स इट. ओके, स्लाउचिंग नहीं करनी है आगे की तरफ, और वो टेबल है उसके ऊपर हाथ रख के ऐसे नहीं बैठना है. ठीक है. एंड बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट. ओके, नॉट रियली, मतलब यू जस्ट काइंड ऑफ यू हैव टू साइक योरसेल्फ टू enjoy the whole thing. Okay, have fun. इस तरह से आपको करना है. ठीक है. नाउ वेयर विल यू पुट, अब आप अपने सर्टिफिकेट्स और ये सब भी लेके गए हो, एक फाइल बनेगी जिसमें आपके अपने सारे सर्टिफिकेट्स हैं और सब चीजें हैं, राइट, ऑफलाइन में. तो उसको कहाँ रखोगे? क्या टेबल पे रख दोगे उनके बीच में और आपके बीच में? कहाँ रखोगे? women have to keep their bag, so where would they put their bag? Yes. So आपके सर्टिफिकेट्स आप अपनी लैब में रखोगे, राइट? यू विल कीप योर फाइल इन योर लैब. women can put their bag on the side, नीचे. Okay, so but you will not put anything on the table. Dress code should be wear plain shirt or stripe. No, plain or stripe, that's okay, whatever is formal. Okay, plain is also okay and striped is also okay. It should be completely formal, right? It should match with whatever your jacket or trousers. So it can be anything, but of course checked जो होती है थोड़ी सी वो कैजुअल हो जाती है. बट फॉर्मल में भी आजकल माइनर चेक्स और ऐसे आते हैं, तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन. ओके, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द इंटरव्यू. क्या लैंग्वेज यूज की जाएगी इंटरव्यू में पूरे टाइम? सर इंग्लिश. इंग्लिश, यस. ठीक है. डिस्पाइट लेट्स से एट टाइम्स वी मे काइंड ऑफ, नहीं, इंग्लिश इफ कंफर्टेबल नहीं, यू हैव टू बेसिकली कन्वर्स इन इंग्लिश by default. Okay, you cannot I mean, you should not initiate a discussion in any other language unless specifically asked. अगर वो बोले आपको हिंदी में कविता सुनाइए या हिंदी में एक जोक सुनाओ, ऐसा कर, सपोज अभी तक तो किसी ने बोला नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन कल को हो भी सकता है, तब अलग बात है. बट अदरवाइज you will speak and converse in that language only. Okay, do I need to prepare a CV? बताइए इसका क्या आंसर है? Yes. I think we should, so. We should, yes, you should. It is not mandatory, but you should. For every college, I think we should prepare a different. नहीं, सेम रखो ना, एक ही रखो ना, अलग अलग थोड़ी होगा. You can create one. See, some colleges may ask you to submit a CV, some colleges may not, mostly they don't. But आपने एक बना के रख लिया तो अच्छा है ना, उसको रख लो. Okay, there is a question that if some panelists use a native language, can we respond in the same language, or we should maintain it in English? See, again, what happens is that there are 3 panel members. Now, if one guy is, let's say, is your native, same native, and then it is better not to respond in that. You can address it in a language that everybody understands, because they might be testing. Okay, so you respond in English. And then see how it goes and where it takes. If the other members also start speaking in that language, then you can switch to that for a bit and then come back. See, this could be again a way of testing how do you respond to a particular situation. देखो, बहुत सारी चीजें जो हैं जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो सकती है वहां पे, जो आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करते हैं कई बार, आपका थिंकिंग ऑन योर फीट, ये जो टेस्ट होता है, तो उसमें आपको उसको देखना है कि क्या है उसका पर्पस, what is he trying to, why is he doing that? Okay, because you cannot assume that all the 3 panelists or 4 panelists know that language. Should we mention previous CAT attempt in CV? नहीं, CAT attempt mention करने की क्या जरूरत है CV में? CV doesn't need to have a CAT attempt or anything. Okay, CV doesn't need to have anything of that sort. All right, now we have a certificate file which we are taking. तो बढ़िया सी एक सर्टिफिकेट फाइल हमें लेनी है. इसमें सर्टिफिकेट शुड बी अरेंज इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट? जो बाद में हुई हैं चीजें आपकी, वो पहले आएंगी एंड देन गोइंग बैक. 10th के पहले के सर्टिफिकेट ना रखें अनलेस कि कोई बहुत आपने महान काम किया है दुनिया में, किसी दुनिया में कोई ऐसा आपने काम किया है, तो ठीक है आप रख सकते हो, बट अदरवाइज डोंट कीप एनीथिंग before 10, because see, lot of you many of you reach out and say achievements में हमने स्कूल में, प्राइमरी में या मिडिल स्कूल में हमने ये किया था, वो किया था, तो उसको ना रखो तो बेटर है. ठीक है, it's better to not to include anything before 10th class. Don't try to hide band marks or gap year. So we will talk about this also in great detail कि आपका academics ठीक नहीं है, आपका
गैप ईयर है या कुछ और है, तो उसको देखो ढकना। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि these people who are sitting there across you, they are very very seasoned, as I already mentioned. और इन्होंने सब कुछ देखा हुआ है. They have heard all kinds of excuses, all kinds of reasonings, all kind of situations they've gone through. ठीक है, इतने सालों से. तो उन्हें वो अगर आप कुछ भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो यू विल बी फाउंड आउट वेरी क्विकली. So it is best to own up whatever deficiencies are there and give justify. उसको कैसे जस्टिफाई करना, उसको कैसे वो करना, वो हम सब डिस्कस करेंगे डेप्थ में एज वी गो अलोंग. बट स्कूल में सर्टिफिकेट नहीं दिया, ओनली मेडल ट्रॉफी, तो सर्टिफिकेट कहाँ से लाए? कोई बात नहीं, मत लाओ ना, मत लाओ. See, if you don't have some certificate, then don't. But if you want to still tell them about that achievement, you can tell them and you say that they did never give certificates. देखो, सर्टिफिकेट कोई आपको, आप अगर कुछ क्लेम कर रहे हो तो उस क्लेम को उनको वेरीफाई करने के लिए एक कागज की जरूरत नहीं है. सी मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि हम ये सर्टिफिकेशन कोर्स कर लें गैप दिखाने के लिए, गैप ईयर को फुलफिल करने के लिए, 3 महीने का ये सर्टिफिकेशन कोर्स कर लें, 2 महीने का वो कर लें. देखो मैं आपको एक बार बता दूं कि वो सर्टिफिकेशन जो है, अनलेस यू कैन शो सम रियल वैल्यू एड, दे आर यूजलेस. Because whatever you claim, you will be found out within 2 minutes that whether you have done anything or not. वो लोग बहुत शातिर होते हैं. Okay, somebody had okay, just to share a story, that one person, he did not have work ex, and he had to justify 1 year gap. So he had an uncle who had a factory. So he showed himself as a quality control manager of that particular factory. And now when he went for the interview, the interviewer simply asked him, okay, what did that factory manufacture? So he said it manufactured this product A. Okay, what is the quality or the ISO code or some code, quality control code or some code for that particular product? Now, if you are a quality control manager, you are claiming to be, then you should be aware of the of that quality QS code of that particular product. But this fellow was not. He had not thought that this situation would occur, that the person sitting next to you or opposite you would be even aware of, or he may not be even aware. वो तो सिर्फ एक टेस्ट कर रहा है आपको कि आपको कितना पता है. तो आप फंबल हो गए वहां पे. तो that fellow was immediately sent back. Okay, no further questions. And despite the fact that he had a great written score, he could not make it. So the point is कि आपको इसमें झूठ, आपको इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिखानी है जिसको कि आप सब्सटैंशिएट नहीं कर पाओ बाय वे ऑफ योर. तो अगर आप सपोज करो, आप बोल रहे हो कि मैं फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ, ओके, मैंने अपना कॉलेज को यहाँ रिप्रेजेंट किया है, नेशनल लेवल पे किया है, इस पे किया है, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है. तो डोंट वरी, दे हैव इनफ वेज टू असर्टन वेदर यू रियली डिड दैट और नॉट. वो आपको फुटबॉल के फील्ड के डायमेंशंस से लेके, गोल की हाइट से लेके, उसकी नेट की विड्थ जो है, या फुटबॉल के वेट कितना होता है, उस कौन से मटेरियल की बनी होती है, वो सब में इतना घुमा देंगे. एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दैट. सो इफ यू आर क्लेमिंग टू बी अ फुटबॉल प्लेयर ऑफ दैट लेवल, देन यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो ये सब चीजें हमें जो भी हम, सो सी दिस इज लाइक अ चेस गेम. ओके, इंटरव्यू इज लाइक अ चेस गेम. आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि वॉट एवर आंसर यू आर गिविंग, वॉट क्वेश्चन कुड इट नाउ एलिसिट, एंड देन हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड देन वॉट नेक्स्ट वुड बी आस्क्ड, एंड देन वॉट नेक्स्ट वुड से. अगर आपने 3-4 स्टेप तक सोच लिया ये, देन यू आर ओके. आप जो भी बोलोगे उसके रिस्पॉन्स में क्या आएगा, फिर आप क्या बोलोगे, फिर उसके बाद क्या क्या आ सकता है. तो अगर आप ये सब चीजें सोच लेते हो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, देन यू आर डूइंग अ गुड जॉब. ओके, बट ये सोचना पड़ेगा हमें, दिस इज लाइक अ चेस गेम. So you have to predict the move of the other person. Okay, so don't try to hide any bad marks or gap year or try to fool them, because that's a short way of rejection. Ensure that you keep your admit card, original certificates and a photocopy safely. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी है. सर्टिफिकेट फाइल ऐसे बनेगी. सर्टिफिकेट फाइल में क्या क्या होना चाहिए मैंडेटरली, वो भी एक चेकलिस्ट है ये. कि आपका एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, फॉर्म्स, ये सब होने चाहिए. एसेंशियल सर्टिफिकेट होते हैं, सपोज यू आर क्लेमिंग टू बी अ कैटेगरी वर्क एक्स, ठीक है, उसका आपको सर्टिफिकेट होने चाहिए. academic certificates, scholarship है, co-curricular, extra curricular, CV if any, photocopies, blank sheets. वो मत रखो जो आपको नहीं दिखाना है. ओके, गलती से कुछ वो दिखा, कई बार लोग रखे रहते हैं, निकालना भूल जाते हैं. यस शुभम. सर मेरे पास ना स्कॉलरशिप के सर्टिफिकेट नहीं है, पर कॉलेज ने ना पीडीएफ में नाम निकाला था, तो वो है, उसकी हाँ कॉपी तो है वो मेरे लगा पास. दो, जो भी हो आपके पास, जो भी हो लगा दो.
जो भी हो ओके लगता है ना। और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, उसका कोई क्रेडिट हुआ है कभी बैंक अकाउंट में, तो वो भी जाके ले आ सकते हो कि ये देखो क्रेडिट हुआ था इसका, आई मीन, हाँ जी सर। है ना, वो भी कर सकते हो आप। सर हाँ, सर अभी करेंटली वर्किंग हो तो उसमें तो कुछ नहीं मांगेंगे ना ये लोग, बिकॉज उसमें आपको सर्टिफिकेट तो अपॉइंटमेंट लेटर मांगेंगे ना। ऑफर लेटर। हाँ, अच्छा ऑफर लेटर ठीक है रखोगे सर। ना आप, हाँ जी ठीक है है सर। ना, ऑफर लेटर रखोगे। बाकी आई डोंट थिंक, आई मीन, दे में आज ज्वाइनिंग वाइनिंग के टाइम पे तो आप अपने उस टाइम तक तो आप छोड़ चुके होगे, तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा ही होगा, है ना। हाँ जी सर, नहीं मतलब ज्वाइनिंग के टाइम होगा बट ऐसे इंटरव्यूज के टाइम नहीं होगा ना। नहीं नहीं, इंटरव्यू के टाइम नहीं है, हाँ लेकिन जब फाइनल हाँ जब आप ज्वाइन करने जाओगे, यस सर। तब तो आपसे जो भी मांग, तब तो आप तो रिजाइन करके तब तो सर्टिफिकेट ले चुके होगे ना तब तक तो। यस सर यस सर। नहीं, सर्टिफिकेट स्कूल में मेडल दिया, ट्रॉफी दिए, कोई बात नहीं, मतलब यार ट्रॉफी मेडल की फोटो खींच दो, या कुछ पेपर पे उसका कुछ एक पिक्चर, एक कोलाज बना लो ट्रॉफी का, वो दिखा दो, आप बोलो यही मिला है हमको, कोई बात नहीं, नो वरीज। सी ऑल आई एम सेइंग इज, जो भी आप क्लेम कर रहे हो उसके में आपको बात करना होनी चाहिए सर। कागज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ओके, व्हाट यू हैव डन, कैन यू डेमोन्स्ट्रेट, सब्सटैंशिएट बाय वे ऑफ वट एवर यू आर सेइंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। अगर आपका कहीं पेपर में फोटो छपी है, न्यूज़पेपर कटिंग वटिंग में नाम आया आपका कुछ है, तो वो भी डाल दो आप। प्रोजेक्ट फाइल अगर कोई ऐसी, बहुत आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया है जिसमें कि, आई मीन सी डोंट, रूटीन रूटीन वाले नहीं जो हर आदमी करता है, अगर कोई ऐसा हो जो वाकई में इट इज, यू कंसिडर इट एज सम ग्रेट अचीवमेंट, देन यू कैन कैरी दैट, ओके। सो ये सब चीजें आपको ले जानी है इसमें। नाउ पीआई प्रोसेस है क्या? सी पीआई प्रोसेस, इफ यू लुक एट इट, इट इज अ सेलिंग प्रोसेस, ओके। सेलिंग क्या कर रहे हो? सो यू आर द प्रोडक्ट हियर, okay, you are selling yourself. Many times I worked for a government sector on temporary basis, I have a leaving certificate, is it applicable? हाँ हाँ, एप्लीकेबल है ना, अब मतलब एप्लीकेबल है, वो हम इंडिविजुअली बात कर लेंगे, ठीक है, वी विल टॉक इंडिविजुअली, दैट शुड बी एप्लीकेबल, ऐसा कोई बात नहीं है। कॉलेजेस आस्क फॉर अपडेटेड सीजीपीए फॉर स्टूडेंट्स स्टिल इन कॉलेज बिफोर रोलिंग आउट कॉल, नो 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 नो, अपडेटेड सीजीपीए कैट रिजल्ट के बाद में वो कुछ नहीं, देखो कॉल आपको एक बार आ गया तो फिर उसके बाद में आपको उनके फॉर्म्स भरने हैं, ठीक है, तो वो उनके फॉर्म्स में फिर जो मांगेंगे वो आप उसको भरना पड़ेगा आपको। अभी जैसे इस स्टेज पे आपको परसेंटाइल के बाद में कुछ नहीं मांगेंगे, उसके बाद सीधे कॉल आ जाएगी आपको, ओके, एंड देन यू विल हैव टू फिल देयर फॉर्म्स, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कॉलेजेस फॉर्म्स, ओके। So you are the product, okay, you are the product, and you can, so you have to align with what they are looking for and yourself, and you should, for that you should know yourself। आप कोई भी प्रोडक्ट जब बेचने जाते हो मार्केट में, जिन्होंने भी अगर कोई सेल्स वेल्स करी है नहीं भी करी है, तो एक सेल्स पर्सन जो होता है उसको अपने प्रोडक्ट को इनसाइड आउट जानना बहुत जरूरी होता है, राइट। द सेल्स पर्सन शुड नो what this product can do, what benefit it can bring to the customer, how can it solve the problems of the customer, and also it should be aware of competition, it should be aware of weaknesses if at all they are there, it should be aware of strengths, right? So all this, look at yourself as a product that you have to sell yourself, okay। अगर आप ये mindset से अपना preparation करोगे तो then it can really give you good dividends। they are trying to select you, so you need to put your best foot forward, okay। So this is strengths and achievements are the key। चाहे वो, ठीक है, कैसे भी हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी के कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, सभी के अचीवमेंट्स हैं। सिर्फ हमको अपने अंदर झांकने की, बहुत केयरफुल इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, ओके। मेनी टाइम्स we don't, I mean, when I talk to people about their strengths or their achievements, then on the surface they think that they don't have too many, और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब प्रोब करो और धीरे धीरे दे ऑल्सो, हाँ, अपना स्वॉट एनालिसिस, यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट डिपिक्शन ऑफ इट, अपना स्वॉट एनालिसिस आपको करना है, यस। See, same thing, the moment you start looking at yourself as a product, then your mindset will change। So strengths और ये सब चीजें हैं, okay। Now how you are judged in the interview, so your knowledge, obviously, breadth, as I mentioned, जो, see, आप aim क्या कर रहे हो, आप, you are not aiming to be a content developer or a software developer or a coder or some maintenance expert or some such technical stuff, right? You are not aiming for that, you are aiming to be a manager,
right? And manager क्या होता है? Manager is a person who is more of a generalist. Okay, a manager is more of a generalist. He's not a specialist. He's not a subject matter expert. So he has to have very broad horizons. Okay, a manager has to know much more about everything else than maybe a software programmer or a technical developer or a technical analyst or some kind of such stuff. उसको जरूरत नहीं है कि आज जैसे मैंने बताया आपको कि 2 दिन पहले फेड हैड कम आउट विथ the announcement that rate hike session is over now, and next quarter onwards we might see some rate cuts, and that is kind of opened the floodgates into the stock market all over the world. So we should be aware, as a manager we should be aware कि कोई डिसीजन के क्या इम्पैक्ट होते हैं. जब रेट हाइक्स हो रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो उसके कारण क्या हो रहा था, हाउ इट वाज अफेक्टिंग, देन हाउ द जियो पॉलिटिक्स अफेक्ट्स बिजनेस, हाउ पॉलिटिक्स. ओके, अभी सो आई मीन मैनेजर शुड नो अ लॉट. आई मीन ब्रेथ और उसकी डेप्थ भी थोड़ी होनी चाहिए. ठीक है, डेप्थ इतनी नहीं होगी जितनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की होगी. आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हो, आप एक इकोनॉमिस्ट नहीं हो, आप एक लेट्स से एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट नहीं हो, लेकिन आपको पता चीजें होनी चाहिए टू सम एक्सटेंट. देन योर थ्योरेटिकल वर्सेस एप्लीकेशन ओरिएंटेड नॉलेज, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज एन एप्लीकेशन ओरिएंटेड फील्ड. जो लर्निंग्स भी होती हैं एक बिजनेस स्कूल में, दैट इज थ्रू द केस स्टडीज. वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स, जैसे आपने मोस्टली जो ग्रेजुएशन करते हैं हम वो टेक्स्ट बुक्स के बेसिस पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको केस स्टडीज के थ्रू लर्निंग्स आर इम्पार्टेड, राइट. तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम को इस कंपनी ने ऐसे सॉल्व किया था, तो आप कैसे सॉल्व करोगे. ओके, और यहाँ पे ये चैलेंजेस है, इस इंडस्ट्री में ये चैलेंजेस है. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल तो ठीक है, बट एप्लीकेशन ओरिएंटेड. देन लिंक टू करंट अवेयरनेस. ओके, हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ the things that are happening around you, whether it is nationally or internationally, or it is in business world, or it is in geopolitics, or it is in some other world. Then ability to apply in new situations. Your favorite subjects, work areas. Now academics. Okay, now ये एक बड़ा pain point है. I'm sure this is a pain point for most of you, right? Because we all hate academics after a certain while, and we are very happy after we are done with it to get rid of these subjects, but they come back to haunt us at these times. So we'll need to figure out some way to brush up at least the common questions. So I'll of course give you some common questions in each areas. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो कॉमन कैसे क्वेश्चन आते हैं. आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, उसमें भी कंप्यूटर साइंस से हो, अगर आप किसी और बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, तो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं. कॉलेज में क्लास नहीं होती थी, लास्ट डे पढ़ के पास होते थे. हाँ, ये तो चैलेंज है ही है, लास्ट डे पढ़ के सभी लोग पास होते थे, बट व्हाट टू डू, वी कांट टेल देम दिस, राइट. तो बिकॉज दे डोंट नीड, दे नीड, सी कॉन्ट्री टू द परसेप्शन, जो टॉप आईआईएम्स हैं, जो भी एक अच्छा कॉलेज है, राइट, ए ग्रेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इट इज़ वेरी रिगरस करिकुलम एंड इट्स अ वेरी रिगरस दिस थिंग. मतलब आपको वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ाई बहुत ज़्यादा होगी. इट इज़ नॉट ईजी टू कोप. ओके, मैनी लास्ट ईयर आई रिमेंबर 2 students had gone to IIM Ahmedabad, and even before the session had started in July, they were bombarded with assignment they had to do online at home. Before they had even set foot in the institute, और उनको they were frantically, they had started working in June itself, okay, before their college started. तो इस तरीके का लोड है. 2-3 घंटे रात को सोते हैं, मुश्किल से 3-4 घंटे की नींद भी नहीं होती है. दे आर फॉर एवर रनिंग. ओके, तो इस तरह से वहाँ पे ग्रिलिंग होती है. जो अच्छे कॉलेजेस है उसमें बोल रहा हूँ. जो अदरवाइज कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे आप लास्ट दिन पढ़ के भी पास हो जाओगे, ऐसे भी कॉलेजेस हैं. बट ऑब्वियसली द डिग्री की जो वैल्यू है वो वैसे कॉलेजेस की नहीं होगी, राइट. तो आपको उस तरह के कॉलेज में आपको एडमिशन देने के लिए दे एक्सपेक्ट यू टू बी वेल होन्ड इन द एकेडमिक्स ऑल्सो. तो एक उनकी एक्सपेक्टेशन होती है. Then work areas. Obviously now who has somebody who's got a work ex of 2 years or 2.5 years or 1.5, 2 years, 3 years,
उनसे थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है लेकिन कि उनसे नहीं पूछते, उनसे भी पूछ लेते हैं एकेडमिक्स। ओके, यू माइट एक्सपेक्ट कि हमारा तो वर्क एक्सपीरियंस है, हमसे तो नहीं पूछेंगे, वी आर सेफ, ऐसा नहीं है भाई, पूछ लेते हैं। अब अगेन देर आर वेज टू कम आउट ऑफ इट ऑल्सो, ऐसा नहीं है। एक इंटरव्यू देखो, एक इंटरव्यू में सबसे पहले तो एक ये परसेप्शन कई लोगों का होता है कि हमें सारे आंसर सही देने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यू कैन स्टिल गेट थ्रू विदाउट आंसरिंग मे बी हाफ द क्वेश्चंस। इट्स जस्ट हाउ यू हैंडल द होल थिंग। कई बार आंसर नहीं पता है लेकिन आपको उस चीज़ को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है और प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता है, योर इनएबिलिटी टू आंसर इन सम वे और द अदर। So that fine, that works, and you can compensate it by showing some extraordinary, let's say, performance in some other areas. मतलब आप अगर एकेडमिकली थोड़ा सा कमजोर पढ़ते हो तो आपको बाकी जो चीज़ें हैं उसमें आप शो कर सकते हो कि यू एक्सेल। ओके, आपका लेट्स से करंट अफेयर्स पे ऐसी पकड़ है कि यू कैन बी ए मे बी अ फॉरेन स्ट्रेटजी एनालिस्ट फॉर द कंट्री। आई मीन ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके से प्रिपेयर करके जाते हैं। तो अगर आप एक तरह पे कहीं लैक कर रहे हो देन यू शुड बी एबल टू कॉम्पेंसेट इट इन सम अदर वे। अच्छी आई एम अगेन, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दीज आर ऑल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप इंस्टीट्यूट्स। ओके, बाकी ठीक है, सेकंड रंग थर्ड रंग में तो चल जाएगा। दोज आर रनिंग देयर ओन शॉप्स विल काउंटेड इन वर्क एक्स। देखो ये एक अगेन बहुत ही एक टिपिकल केस है कि अपने खुद के एस्टेब्लिशमेंट में काम करना वर्क एक्स होता है कि नहीं होता है, तो वो उनके हिसाब से नहीं होता है। ओके, अच्छे कॉलेजेस में वो बोलते हैं कि नहीं, आपकी खुद की दुकान में काम करना है को हम वर्क एक्स नहीं मानेंगे। तो उसको कैसे प्रेजेंट करना नहीं करना, वी विल सी, वी विल टॉक इंडिविजुअली एंड देन वी विल डिस्कस। यस वैभव। सर एकेडमिक्स में मेरे साथ तो ये हुआ था, और आई थिंक जो मेरे बैच के उनके साथ भी हुआ होगा। लाइक आधी डिग्री तो हमारी ऑनलाइन थी, तो तब सीजीपीए काफी अच्छी थी। एंड जब से ऑफलाइन स्टार्ट हुई तो मेरी सीजीपीए में तो सिग्निफिकेंट ड्रॉप आ गया। तो सर उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो करेंगे, विल डिस्कस, विल ठीक है डिस्कस, सर। विल डिस्कस सम वेज टू जस्टिफाई इट। विल देखो, अभी जैसे ये सब जो इस तरह के आप लोगों को इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इसमें माय सजेशन वुड बी दैट यू प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल think yourself, okay, that how, under what circumstances, because see there are always extenuating circumstances। अब देखो, एक तो ये कि यार अगर पूरा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है, हमने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, तो अलग बात है ना। लेकिन अगर आपने कहीं पे आपके अचीवमेंट बहुत अच्छे हैं और किसी किसी जगह आप फॉल्टर हुए हो, कभी कभी फॉल्टर हुए हो आप, एंड देयर वुड बी मे बी जेन्युइन रीजन फॉर इट, तो दैट्स नॉट रियली व्यूड वेरी नेगेटिवली। कि इट इज इट। अब अगर आपका कंटिन्यूसली ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो रहा है, मतलब कि आप हिस्ट्री चार हिस्ट्री शीटर हो, तो अलग बात है, फिर उसको हैंडल करना एक अलग सिचुएशन है, वो हम देखेंगे। उस केस में अगर आपके सपोज 99.8 परसेंटाइल आ गए हैं तो आपने उस कलंक को भी धो दिया एक तरह से। तो देखो बहुत सारी चीजें, अगर हम बेयरली कोई ऐसा परसेंटाइल आया है हमारा जो कि हमें एक कॉल दिला सका है और हमारा बाकी की चीजें भी बड़ी एवरेज हैं, तो फिर एक अलग उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो आई होप यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सभी के ऊपर नीचे कोई, देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता है ना, परफेक्ट कोई होता नहीं है। तो ठीक है, दुनिया में ऐसे होते हैं, आई एम नॉट सेइंग होता कोई नहीं होता। देर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड हु हैव बीन एंडाउड, ओके, जिन्हें भगवान ने बहुत जनरसली दिया है। आईआईटी टॉपर्स हैं 8 10 10 15 20 30 लोग, मतलब वो ऊपर से लिखा के लाए हैं, उनको छोड़ दो। ओके, हर फील्ड में आपको मिल जाएंगे ऐसे 10 15 20 30 लोग जो ऊपर से लिखा के लाए हैं, और वो कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठेंगे या जाएंगे तो उनको कोई वहां पे मना नहीं कर सकता है, राइट। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, राइट। बाकी सब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, राइट। अभी एक माई ओन एनजीओ विल इट गिव, हाँ देखो सब तरह से आपको एडवांटेज सी। अब आपके ओबियसली कि सबके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, मैंने ये किया मैंने वो किया, इसका मुझे एडवांटेज मिलेगा नहीं मिला, एडवांटेज आपको लेना है। हाउ टू गेट इट, वील हैव टू वर्क आउट, बट उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना। यू हैव टू हैव अ लाइफ स्टोरी। ओके, आपको अपनी एक लाइफ स्टोरी लिखनी पड़ेगी। देखो ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे आंसर, मतलब मैं आपको हेल्प करके आपसे एलिसिट करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि इसमें मेरे पास कोई आपके लिए रेडीमेड आंसर है हर सिचुएशन के लिए। आपको पहले तो अपनी लाइफ स्टोरी लिखनी पड़ेगी ना, फिर उस लाइफ स्टोरी को हम देखेंगे कि उसमें से कौन कौन से नगेट्स निकाल निकाल के और उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो वो आपको एक बेस वर्क तो आपको करना पड़ेगा कि आपने अगर सपोज करो कोई एनजीओ चलाया है तो उससे क्या फायदा हुआ है, किसको फायदा हुआ है, कैसे दिखा सकते हैं, उसमें क्या टेंजिबल चीजें निकल के आई उससे, क्या नहीं, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। हाँ, दिखाने के लिए दिखा रहे हो तो फिर वो अलग बात है,
उससे कोई फायदा नहीं है ना, कि अगर मुझे सिर्फ दिखाना है कि मैंने ये चलाया, मेरे पास में सर्टिफिकेट है, उससे कुछ नहीं फायदा। टेंजिबली आपने क्या अचीव किया ये बताओ ना। ठीक है, आपने अगर अपनी दुकान पे भी काम किया तो आपने क्या करा है? ओके, कैन यू शो दैट यू हैव expanded the business, you have added some product lines, you have done this, you have taken this from x to 2x or 3x, प्रॉफिट बढ़ा दिया आपने, इन्वेंट्री कम करा दी आपने, कॉस्ट कम करा दी, क्या करा है? कुछ तो करा है। तो वो तो बताना पड़ेगा ना, वो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो केवल एक कागज के टुकड़े से काम नहीं चलता है। ओके, तो देन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, आपके कितने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज का पार्ट है जो कि वहाँ पे जज की जा रही है। देन यू आर बीइंग जज्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, हाउ वेल यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। नाउ अगेन एक मिसकंसेप्शन है कि आपकी अंग्रेजी बड़ी फ्लुएंट होनी चाहिए। सी, दिस इज अ मिसकंसेप्शन। फ्लुएंट नहीं होनी चाहिए, भले ही ना हो, लेकिन वजन होना चाहिए। ओके, you are see, I have seen many people in corporate world who are not very fluent. There may be n number of such examples मैं बता सकता हूँ आपको, who are really doing I mean extremely good at topmost places in the corporate world, but their clarity of thought, their arguments, their reasoning, whatever they are communicating may not be very fluent, but it comes out very powerful. तो आपको कोई ये नहीं है कि कॉन्वेंट एजुकेटेड और ऐसे कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि फ्लुएंसी is not the point. Point is how well, how strong your arguments are. Okay, तो आपकी इफेक्टिव और एफिशिएंट होनी चाहिए। योर at times when I get nervous, stammer a lot, this is a red flag. Yes, this is a red flag. You need to work on it to improve. Okay, we'll talk about how to improve our speaking skills, how to uh, uh, go about bettering what we are currently. उसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आपको करनी पड़ेगी। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ अगर अभी तक नहीं की है कोई बात नहीं, लेकिन आगे अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो करना पड़ेगा। तो आई विल टेल यू हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो यू कैन प्रैक्टिस दोज थिंग, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट डिलीजेंटली। ऐसा नहीं है कि वो कर दिया हमने, एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, और उससे हो सकता है आपको कोई इंस्टेंट रिजल्ट भी ना मिले, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद मिले, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। और अगर देखो, मैं एक बार बता दूं आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये बात मतलब थी, दिस मे लुक लाइक sermonizing टू यू और प्रीचिंग टू यू और समथिंग, बट टेक इट फ्रॉम मी दैट इफ यू अगर करने की ठान लो तो फिर हो जाती चीज़ें, और सही तरीके से करो तो, है ना। ऐसा नहीं है। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों क्यूज देखे जाएंगे कि किस तरीके से बोल रहे हो, वेदर यू आर मेकिंग आई कॉन्टैक्ट और नॉट, वेदर यू आर हैविंग अ गुड एक्सप्रेशन ऑन योर फेस और नॉट, और वेदर यू आर दुखी। कई बार हम दुखी हो जाते हैं, 1-2 आंसर नहीं दिए तो सल्क करने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो वो सब ना हो, ठीक है। आई कांटेक्ट वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, हिंट ऑफ स्माइल है ना। बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं। और स्पीकिंग एंड लिसनिंग, आर वी लिसनिंग? ओके, मेनी पीपल आर सो फॉन्ड ऑफ देयर वॉइस दैट दे डोंट लाइक टू लिसन, और दे आर वेरी इम्पेशेंट। तो आप प्रॉपरली सुन रहे हो, उससे नहीं सुन रहे हो। ओके, हाउ मच यू आर एंगेज देयर। देन गोल क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी कितनी है आपकी। अब इसमें आ जाता है क्वेश्चन, वाई एमबीए? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, जिसके बारे में आप लोगों को सोचना शुरू कर देना चाहिए और अपने अपने आंसर बनाने चाहिए। वाई डू यू वांट टू डू एमबीए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन योर करियर गोल्स, ओके, आप क्या चाहते हो लाइफ में? ओके, वेयर डू यू वांट टू रीच? एंड हाउ डू यू कनेक्ट इट टू योर पास्ट? सी, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज अ कोहेरेंट स्टोरी। मतलब ये नहीं है कि हाँ जी, आज क्या हो गया, अब ग्रेजुएशन हो गया, चलो एमबीए कर लेते हैं, और कुछ करने को नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बताना नहीं है वहां पे। ओके, यू डोंट हैव टू टेल देम दिस, फाइन, दिस इज अ पाथ, और दिस इज अ शॉर्ट वे टू गुड सक्सेस, राइट? कि एमबीए कर लो बढ़िया कॉलेज से, बढ़िया प्लेसमेंट होगी, एंड यू विल राइज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड राइज इन लाइफ, ठीक है। लेकिन उसको लिंक करना है कि अभी जो आप कर रहे हो, वाई एमबीए, एमबीए जब आप करोगे और उसके बाद आपके क्या गोल्स हैं, तो ये सब सिंक में होने चाहिए, है ना। ये नहीं है कि ये कुछ ऐसा है, अभी वहां जा रहे थे, अब यहाँ आ गए, फिर ये कर लेंगे और शायद फिर वहां चले जाएं, फिर नहीं शायद यहाँ चले जाएं, ऐसा नहीं है। ये कंसिस्टेंसी उनको दिखनी चाहिए, है ना। और ये कंसिस्टेंसी आपको इन सब क्वेश्चन में दिखेगी। सी, आप जैसे
ठीक है, many of you, let's say you say why do you want to do MBA? हम कॉलेज में थे, वहाँ पे हम कई कमिटीज़ के हेड थे, कई सारी ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों के, तो हमें अपनी मैनेजमेंट स्किल्स का वहाँ पे आभास हुआ. वी रियलाइज दैट वी वर वेरी गुड मैनेजर्स एंड दैट इज वाई वी वांट टू डू MBA. नो, that is the partial reason. Okay, you may have some good organizing skills, you may have some good leadership skills, but that is not the reason why you want to do MBA. Okay, you want to do MBA because you want to reach somewhere. Okay, you want to reach somewhere. Where do you want to reach? So you want to reach maybe top of corporate hierarchy in some good company, in some large company, or you want to maybe have a startup of your own, or you want to become an entrepreneur. Entrepreneurial का रास्ता जो है वो थोड़ा सा डाइसी होता है इसमें. I don't recommend that you, I mean, you say that I want to be an entrepreneur or I want to launch my own company at some date and all that. देखो, उस रास्ते में आप जो लेके जाते हो ना, तो उस रास्ते में फिर आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करने चाहते हो. ओके, विच एरिया, व्हाट, क्या प्लान है आपके दिमाग में, कितने कॉन्क्रीट हैं आपके, कैसे जाओगे उस रास्ते को, कैसे प्राप्त करोगे. तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना. तो आपको इसलिए इसमें जब हम बात करेंगे तो ठीक है, इट इज बेस्ट टू काइंड ऑफ से दैट ओके, आई वांट टू रीच द लीडरशिप पोजीशन इन अ लार्ज कॉर्पोरेट विद इन सो एंड सो मेनी ईयर्स एंड दिस इज हाउ आई वांट टू प्रोग्रेस. MBA करेंगे, वहाँ पे नेटवर्किंग करेंगे, बढ़िया आपको एक पीयर ग्रुप बन जाएगा, उसके बाद प्लेसमेंट होगा वहाँ पे, फिर आपको एंट्री मिलेगी किसी अच्छी कंपनी में जो कि आपको आज नहीं मिल सकती. ओके, मेनी डोर्स विल बी ओपन फॉर यू आफ्टर MBA विच वुड नॉट बी ओपन टुडे. Okay, and then you will start working to your best of abilities, start rising, taking more and more responsibilities. You will work in different roles, different cross functional आप करोगे, and then you will start growing and reaching the top. इस तरह से आपको एक पूरा पाथ जो है वो दिखाना पड़ेगा उसको, और इसलिए हम MBA करना चाह रहे हैं, है ना. तो और आपको करंटली अभी क्या कर रहे हो उससे अलाइन करके, और अभी आप अगर सपोज करो IT इंजीनियर हो, IT में काम कर रहे हो, TCS में काम कर रहे हो, तो आप क्यों जाना चाहते हो, राइट. या आप अभी किसी प्रोडक्शन किसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो, या अभी कॉमर्स में आप कहीं पे आप बिजनेस एनालिस्ट हो कहीं पे, या आप कुछ और हो कहीं, राइट. यू आर वर्किंग इन सम अदर एरिया लेट्स से, एंड यू वांट टू, सो व्हाई डू यू वांट टू गो. तो ये चीज़ें हमें थोड़ा देखनी है. तो गोल क्लैरिटी होनी चाहिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, बैकअप प्लान्स एंड रिस्क असेसमेंट. ओके, इफ वी डोंट सिलेक्ट यू व्हाट विल यू डू. अरे सर, ये तो सोचा ही नहीं, इस बारे में तो सोचने भूल गए. नहीं, आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर अभी इस बार नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं. दो आई डोंट थिंक एनीथिंग because of any reason that is there within my control, I would not be selected because I have put in a great amount of hard work and everything. But still, if there is something that is beyond my control and I'm not selected, then I'll go back and do this, and I'll again come back next year and assess myself more carefully that what went wrong this time, and maybe take care of those shortcomings and come up better next year. इस तरह से कुछ आपको बताना पड़ेगा, बैकअप प्लान क्या है. सपोज आपने okay, when we'll talk about gap and all that specifically when we come to that, कि उसको कैसे जस्टिफाई करना है, उसको क्या दिखाना है, वो सब भी देखते हैं. ओके, सो ये सब चीजें आपकी जज हो रही हैं. बेसिक पर्सनालिटी आपकी, एम्बिशन, ओके, हाउ एम्बिशियस यू आर, हाउ मच, व्हाट आर योर वैल्यूज, बिलीफ्स एंड बिहेवियर. ओके, एथिकली इंटेग्रिटी आप में है कि नहीं है, किस तरीके का बिहेवियर है, या आप यू आर काइंड ऑफ शॉर्ट टर्मिज्म है आपके अंदर, या लॉन्ग टर्म आप सोचते हो. ओके, यू वैल्यू व्हाट इज योर वैल्यू सिस्टम, विच are the traits that you kind of swear by. Okay, how is your personal disposition? You are a friendly, come across as a friendly, amicable, amiable person who likes to mix up with people, or you are kind of a little introverted, or within yourself. So all those, how is your personal disposition, how you make relationships or establish rapport with people. तो ये सारी चीजें वो देखते हैं आपकी बेसिक पर्सनालिटी में. Interpersonal or team skills, because this is not a individual game. You are not going to play tennis or badminton here. You are going to play cricket or football here, where individuals are obviously subservient to the team. तो आपके interpersonal skills कैसे हैं, openness to ideas. Okay, so all these things, your analytical skills, problem solving skills. तो कई बार वो puzzle type के question भी डाल देते हैं इसमें, very offbeat kind of questions. They will say that tell me how many
tennis balls would be there in the city of Delhi. इस तरह के आपको कोई क्वेश्चन अगर दे देंगे, वो बताइए कि दिल्ली शहर में आपके हिसाब से कितनी टेनिस बॉल्स होंगी आज, या दिल्ली शहर में कितनी विंडोज होंगी पूरे शहर में. गेस्टिमेट्स, करेक्ट. तो इसको गेस्टिमेट्स कहा जाता है, पजल्स भी कह सकते हैं. तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार लोगों को दिए गए हैं. सो नाउ नोबडी इज लुकिंग फॉर अ करेक्ट आंसर देयर, बिकॉज नोबडी नोज. ना तो किसी के अंदर कैपेबिलिटी की वो काउंट कर सकता है, बट वो पूरी प्रोसेस जो है आपकी, कि हाउ यू अराइव एट दैट पर्टिकुलर आंसर, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर. तो ये सब चीजें आपकी टेस्ट हो रही है. नाउ देयर इज नो वन काइंड ऑफ अ पर्सन दैट दे आर लुकिंग फॉर. ओके, ऐसा कुछ एक उनके दिमाग में वो नहीं है, एक स्लॉट कि इस ये टिक बॉक्स चेक बॉक्स कर चेक कर लिया उन्होंने, दिस. ऐसा नहीं है. Nobody gets rejected except in exceptional situations on the basis of interview alone. Okay, and as we know that interview का एक weightage होता है. Interview is not the sole factor that decides in the second round. As I just mentioned in the beginning, that NMIMS Mumbai has got 10% weightage only for personal interview. 50% तो NMAT के ऊपर है, बाकी 20% Watson Glaser पे है. तो this is not the interview alone that determines. Right, but then of course it doesn't mean that you mess it up very badly. किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको हम कुछ बकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज द जनरली दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो आप लोगों को अब ये एक्सरसाइज है, यू हैव टू थिंक ऑफ, दिस इज लाइक योर समथिंग व्हाट वी कॉल एज एलिवेटर पिच. हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म, एलिवेटर पिच? एनीवन? So what does it mean? Why is it called an elevator pitch? सर थोड़ी सी देर में ही आपको अपने बारे में एक तरह से चीजें बतानी, जैसे सपोज मैं एक सेल्समैन हूँ और मेरे पास कोई बंदा है जिसको मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरी मदद कर सकता है प्रोडक्ट बिकवाने के लिए, और वो उसको इस तरीके से आया कि जैसे वो एलिवेटर पे चढ़ रहा था, एलिवेटर की एक छोटी सी ड्यूरेशन होगी, तो मेरे को उस छोटी सी ड्यूरेशन में उस प्रोडक्ट के बारे में और अपने बारे में इस तरीके से उसको बताना है कि वो मेरे हेल्पफुल हो या फिर मेरे यूज आ सके, वो बंदा जो मैं चाहता हूँ वो चीज हो सके. करेक्ट. तो देखो, एलिवेटर पिच आया यहाँ से कि सपोज यू वांट समथिंग टू बी डन, आपको सीईओ से या कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल है जिसकी एक्सेस आपके पास में नहीं है, और सपोज लेट्स से टुडे यू वांट समवन टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस और समथिंग. ऑब्वियसली दीज आर वेरी बिजी पीपल. ओके, तो उनके पास टाइम नहीं है कि घंटों तक आपकी बात सुनेंगे. तो एक एलिवेटर में सपोज यू कम अक्रॉस देम, सो विद इन दैट वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन यू नीड टू मेक एन इम्प्रेशन. तो अपने जो की पॉइंट्स जो आप बता सकते हो विच मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, दैट यू शुड बी एबल टू टेल, नॉट समथिंग दे ऑलरेडी नो. जनरली हम जैसे किसी को बोलते हैं टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वो अपने पूरी लाइफ हिस्ट्री बताना शुरू कर देते. ओके, माय नेम इज सो एंड सो, आई डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो, आई बिलोंग टू दिस सिटी, आई गॉट 2 brothers 1 sister, आई गॉट माय फादर इज सो एंड सो एंड आई गॉट दिस. अरे जो चीज़ें उसको ऑलरेडी पता हैं, जो उसके आपके सीवी में लिखी हुई हैं या जो आपके फॉर्म में आपने ऑलरेडी फिल कर दी हैं, वो बताने की जरूरत ही नहीं है. राइट, हियर यू हैव टू टॉक अबाउट समथिंग विच मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड विच वुड पिक हिज इंटरेस्ट. ओके, पिक, ये वाला पिक, स्टिमुलेट हिज इंटरेस्ट. एंड फर्दर, नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू टर्न द कॉन्वर्सेशन इन योर फेवर, वेर इन यू कैन काइंड ऑफ गिव हिम सम हिंट कि अगला क्वेश्चन कहाँ से. क्योंकि देखो, इंटरव्यू जो प्रोसेस होती है ये एक इट्स लाइक अ कॉन्वर्सेशन. राइट, वन थिंग लीड्स टू द अदर. ऐसा कभी कभी है कि ठीक है एक रैंडम बात कर रहे हो, फिर दूसरा क्वेश्चन रैंडमली आ गया, होता है वो भी, बट जनरली एक चीज़ से दूसरी चीज़. तो यहाँ पे कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बताओगे तो कॉन्वर्सेशन उस तरफ जा सकती है. देयर इज वन अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव. तो इसके बारे में सोचो, आप अच्छे से सोचो कि आप अपने बारे में क्या बताओगे. इसको हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. नॉट रियली वी कम अक्रॉस लाइक अ पैरट, कि हम रटा रटाया तोता जैसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम वी लिव दिस. राइट, वी बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन दिस अबाउट आवर सेल्फ. तो नॉट अ मस्ट, बट लेकिन आता है 90% जगह ये पूछते हैं. ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन भी होते हैं. देन यू आर आस्क्ड अबाउट योर एकेडमिक्स और योर वर्क एक्सपीरियंस. राइट, करंट अफेयर्स, करंट अवेयरनेस, not just news but views.
And then your personality related questions, strengths, weaknesses, achievements, failures, learning incidents, likes, dislikes, ये सब चीजें. Yes, शुभम. सर अब जैसे वर्केक्स जो मेरे केस में वर्केक्स मेरा अभी केवल 3 महीने ही हुए हैं और प्रोजेक्ट्स मेरे को जनवरी में मिलेंगे जिसमें लाइव प्रोजेक्ट जिस पे काम करूंगा मैं. तो इंटरव्यू आते आते मुश्किल से मेरे को 1-1.5 महीना होगा. तो मतलब वर्केक्स रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये करूँ ही ना? नहीं, वो आप कर सकते हो. वर्क से रिलेटेड क्यों नहीं कर सकते हो? बहुत सारी क्योंकि सर 4-5 महीने ही होंगे. नहीं 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 यार, देखो वर्क के रिलेटेड मतलब ये नहीं है कि वो आपके जॉब के रिलेटेड नीति. सबसे पहले तो आपका रोल, हाउ मच ऑफ यू हैव द विजिबिलिटी और क्लैरिटी अबाउट योर रोल. वो रोल हाउ डज इट, लेट्स से, हाउ डज इट फिट इन द होल ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव. आप कौन से डिवीजन में हो, वो डिवीजन क्या करती है, उसको कौन हेड करता है, उसका क्या रोल है, उसका क्या, लेट्स से, फाइनेंशियल्स क्या है उसके, पूरी कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है, आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं. ये सब चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी कि अगर आपको सपोज करो यू आर नॉट, अभी जस्ट आप लगे ही लगे हो वहाँ पे, तो आपको जॉब रिलेटेड कोई आपके रिजल्ट्स भी नहीं होंगे, अभी आप ट्रेनिंग पे हो, प्रोबेशन में हो मे बी, तो आपसे ये हाँ सब जी. चीज़ें पूछी जा सकती हैं. ठीक है. एंड यू शुड बी ऑब्वियसली, फिर आपसे एकेडमिक्स के बारे में भी पूछेगा. तो हाँ आपको जी अपनी सर. कंपनी के बारे में पूरा A to Z पता होना चाहिए, इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता होना चाहिए, है ना. तो वो सब चीज़ें वर्क एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएंगी. ओके सर. ओके. जनरल नॉलेज, करंट अवेयरनेस हो गया, ये तो हो गया. पर्सनालिटी रिलेटेड चीज़ें हो गई. ठीक है. गोल क्लैरिटी, ये दिस वी टॉक्ड अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, करियर वर्सेस लाइफ गोल्स, व्हाई MBA, इफ नॉट MBA, बैकअप प्लान्स, हॉबीज, इंटरेस्ट. अब देखो हॉबीज और इंटरेस्ट में ये है कि हॉबीज वो होती हैं जो कि ज़्यादा पैशनेटली परस्यू की जाती हैं. इंटरेस्ट वो होते हैं जो हम थोड़े कर्सरली भी कर सकते हैं, है ना. जैसे अगर इंटरेस्ट है, मूवी वूवी देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं कुछ, तो ठीक है. लेकिन अगर हॉबी बता रहे हो आप, मेरी हॉबी है फुटबॉल, तो फिर आपको बहुत डेप्थ में उसके बारे में पता होना चाहिए. ओके. जैसा मैंने बताया आपको कि फुटबॉल का वेट क्या होता है, किस मटेरियल से बनी होती है, कौन कौन सी ब्रांड बनाती हैं उसको, क्या है उसका, देन टीम्स कौन सी हैं, सारी लीग्स पता होनी चाहिए, कौन सी लीग कहाँ पे कौन कौन जीत रहा है, कौन, आई मीन द एंटायर वर्क्स. इफ यू क्लेम टू बी पैशनेट अबाउट और इंटरेस्टेड इन हॉबीज, बुक्स में अगर आप बताते हो तो फिर काफ़ी डेप्थ में आपको, तो वट एवर यू आर प्रोजेक्टिंग योर एज अ हॉबी, यू शुड नो क्वाइट अ गुड डील अबाउट इट. ओके. डोंट, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो लोगों को सब पता होता है. They are very well read and very broad horizon people there. They know a lot of things and they keep interacting, right. उनका तो काम ही है, अगर वो सैकड़ों इंटरव्यू ले रहा है तो ऑब्वियसली उसको काफ़ी कुछ वैसे ही पता चल जाता है. एथिकल क्वेश्चंस, राइट, टू टेस्ट योर इंटेग्रिटी, कि ब्राइब देना, जैसे ये डिसीजन मेकिंग में जैसे आते हैं क्वेश्चन, इज इट जस्ट टू हैव नो हॉबी पर ओनली इंटरेस्ट. यस, इट इज जस्टिफाइड. एवरीथिंग इज जस्टिफाइड. देखो आपके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है, आपको क्रिएट नहीं करना है कुछ भी नकली, है ना. बिकॉज इफ यू क्रिएट नकली देन यू विल बी फाउंड आउट. तो रादर यू कैन से दैट आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन दिस एंड आई वाज, देयर वाज वेयर इज द टाइम, आई डिडंट हैव टाइम टू. तो ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल. एंड एज आई सेड, okay, if you let's say are lacking in some or deficient in some area, then if you have, you can show that you have more than made up for it by some other, in some other way, then that nothing like it. कि ठीक है सर, मेरे को ये सब वेब सीरीज देखने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये करता हूँ, है ना. तो इस तरह से आप बता सकते हो. और अगर वो भी नहीं है तो देखेंगे, वील सी. ओके, वील टेक इट ऑन अ केस टू बेसिस. पजल्स एज आई सेड, अनएक्सपेक्टेड वंस, राइट. ये एक जोक है. वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन 5 years, इफ यू आस्क वन मोर स्टूपिड क्वेश्चन, रीजन. इस तरह से भी पहले चलते हैं. ठीक है. तो नाउ वील जस्ट काइंड ऑफ, अभी तक any questions, we'll otherwise we'll just cover some FAQs, and if you have a FAQ, then I can, do I need to know, okay, meaning of my name, about the college? Yes, you should know this. आपको अपना शहर, गांव, आपका कौन विधायक है एरिया का, कौन MP है वहाँ पे, कौन सी पार्टी रूल कर रही है. देखो कई कॉलेजेस में जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज UPSC वाली जनरल नॉलेज नहीं है, लेकिन पूछ सकता है आपके स्टेट का गवर्नर कौन है. ठीक है, उस स्टेट का गवर्नर कौन है, उस स्टेट के, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा. जनरल जैसे स्टेट्स हो गए, कितने स्टेट्स, कितने यूनियन टेरिटरी, चीफ मिनिस्टर्स, देन पार्टी रूलिंग, देन ऑपोजिशन में कौन है, देन आई मीन द एटलीस्ट द टॉप ऑफ द लाइन थिंग्स यू शुड नो अबाउट योर ओन नेटिव, योर स्टेट, प्लस
ऑल्सो वेर यू आर गोइंग। तो आप अगर कॉलेज हरियाणा में है तो थोड़ा हरियाणा के बारे में आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। यस शुभम। सर करंट अफेयर्स के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करें? वो अभी मैं धीरे से आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स के लिए। अभी तो आप सिर्फ पढ़ना शुरू कर दो न्यूज़पेपर, यू नो गेट स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट whatever is happening. Then we will start having those current affairs sessions where I'll give you every day a couple of topics which you need to prepare on, and we will discuss them, and that is how we will build our understanding and views on each and every issue. अब जैसे सिंपल है यूनिफॉर्म सिविल कोड ये चल रहा है आजकल, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है इसके ऊपर आपको I'll give a topic so you can write an essay also on it, VAT जैसा जैसे लास्ट ईयर हुआ था। जैसे लास्ट ईयर करते थे, right? And then we Okay. discuss it in a class, so that you know we can discuss it from all angles and form our views on it. Got it, sir. एक मिनट, just give me 1 second. So fee structure of this course, and there is a concession rebate available. Okay, Aman, why don't you do one thing? You can send me a separate message. Okay, you can take my number. मैंने फीस कोर्स वोर्स तो उस पर बताया हुआ था। आपको अगर इंडिविजुअली कुछ भी है वी विल डिस्कस, यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर, आई विल डिस्कस नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यू। देखो वो नीड जितने भी चाहिए, मतलब मेरा कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं 2 मॉक इंटरव्यू दूंगा, 3। आपको 5-10 करने 10 करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। as long as you know you are not satisfied, we will I mean this hallmark, as I've said, of this course is that I'll work very closely with you, so whatever that takes. Okay, another question was why he asked why Bihar is so poor and awkward. हाँ ठीक है ना, पुअर बैकवर्ड, बिहार इज सो पुअर एंड बैकवर्ड। यस बिल्कुल पूछेगा वो आपको, अगर आप बिहार के हो तो पूछेगा वो क्या करना चाहिए यहाँ पे। प्रोहिबिशन किया नीतीश कुमार थे, इज इट गुड थिंग, क्या प्रोहिबिशन हटा देना चाहिए, ये सब चीजें आपको फिर पता होनी चाहिए वहाँ पे बिहार के अगर आप हो तो। Alright, so I think more or less I'm done with whatever I wanted to show you today. This was just a kind of introductory and a brief overview of these. We will get into nitty-gritties as we go along. आप लोगों को at this moment I will leave it with this that thought that you should start preparing your own answers to those, at least keep giving some thought and jotting down, making some notes about all those questions that pertain to you, and just think that you are the product and you have to sell yourself. तो आप किस तरीके से अपने आप को बेचोगे, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, राइट? तो उसके लिए अपने आप को आपको इक्विप करना है अच्छी तरीके से। So that's all today from my side. Any questions? बाकी आपको you can all reach out to me individually. You have my number, you have that group, आप मेरा नंबर या तो वहाँ से भी ले सकते हो अगर आप, if you are not if you don't know me, I mean some of you are not a part of my classes, right? Most of you, quite a few of you are, so some of you who may not be, so you can note my number. Okay, you can give me a call, you can give me a message, send me a message. Okay, so thank you. I hope this was useful. Any feedback, any comment? All right. Okay, thank you and good night. Bye bye. Good night, sir. Take care. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.